Guys, my name is Rajan. Thumbs up, thumbs down below, share and subscribe and slap on the bell icon to get my future videos updates regularly. तो guys, मेरा नाम राजन है. लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन की घंटी पे क्लिक कर दो ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स लगातार मिलती रहे, है ना. तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपना वीडियो. आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है हमेशा की तरह. तो आज हम बात करेंगे कि भाई कैसे हम अपनी आई कांटेक्ट, है ना, अपनी स्माइल, फ्लर्टिशियस स्माइल और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग लड़कियों को अप्रोच कर सकते हैं. और साथ ही साथ कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, है ना, कि कहाँ पॉसिबल हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ आपको लड़कियाँ मिल सकती है ना. और so guys, today I'll be discussing about about how you can use your eye contact, flirtatious smile and of course your body language to your advantage in order to approach women. It will help you in approaching women. And I'll also be discussing about the possible spots where you will get these girls. So प्लीज़ स्टे ट्यून गाइस. जैसा आपको मालूम है, मैं वीडियोस बनाता हूँ हिंदी में और इंग्लिश में. तो पहले मैं आज हिंदी में बात करूँगा, फिर आपको इंग्लिश में बात करूँगा ना, सेम कंटेंट में. तो आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स तो मिलेंगी ही, साथ ही साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन सीखने में भी हेल्प मिलेगी. सो गाइज, लाइक आई मेक वीडियो in a single video. I'll be discussing the same topic in Hindi first, then I'll be speaking the same topic in English. So first of all, you will get to learn the tips and tricks of flirting and dating tips, as well as you will also be able to understand the concept of spoken English. So if you watch my regular videos, so you will definitely benefit from it. तो दोस्तों, शुरू करते हैं. पहले हम अपना हिंदी लैंग्वेज में, है ना, उसके बाद इंग्लिश में. तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं ना. अब देखो, बात ये आती कि भाई लड़की को पटाना है ना, काफ़ी सारी लड़कियां पटानी है ना, लेकिन हम लोगों को मिलेंगी कहाँ वो. अब देखो, जो जिसको जहाँ लड़की मिल जाए ना, स्पॉट्स की बात आती है बेसिकली. वो स्पॉट्स कौन कौन से है जहाँ हमको लड़कियां मिल सकती है. अब देखो, जो आपको स्पॉट्स मिल जाए ना, जो आपके लिए स्पॉट, जहाँ आपको लड़की मिल जाए पहली बार, जहाँ से आप लड़की पटा रहे हो, तो वो स्पॉट्स आपका लक्की स्पॉट होता है ना. इसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई यहाँ आप जाओगे तो यहाँ लड़की. लेकिन मेरे कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ. कुछ शॉर्ट स्पॉट्स हैं जिन्हें अगर आप ट्राई करोगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, है ना, वहाँ पर जाके. तो उसमें नंबर 1 पे आता है, मेरा फेवरेट स्पॉट में से एक आता है, जो है ग्रॉसरी स्टोर्स, है ना, जहाँ लड़कियाँ सब्जियाँ वगैरह खरीदने जाती है ना. बैंगन, टमाटर, भिंडी, बंद गोभी, फूल गोभी, मिर्च. तो वहाँ वो बार्गेनिंग वगैरह करती है ना. तो वो सुपरमार्केट्स में भी हो सकता है ना, या डेली नीड की शॉप्स जहाँ होती है वहाँ भी मिल जाता है. तो आपको ऐसी ऐसी जगह पे हंट करना है गर्ल्स को, है ना. और वहाँ आपके पास एक बहुत अच्छा मौका भी होता है उनसे बात करने का, है ना. वो सब्जी के बारे में बात कर सकते हो, एक कॉमन टॉपिक हो गया ना, आपको मिल जाता है. देन सेकंड नंबर पे मेरा जो फेवरेट हॉटस्पॉट आता है, वो आता है भाई, मेरा बेस्ट है पर्सनली जो बोलो तो, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हो गया आपका कॉलेज हो गया, है ना. देन आपका हो गया स्कूल्स हो गया, कोचिंग क्लासेस होगी, है ना. और स्कूल्स कॉलेज तो है ही खैर. तो वहाँ पर आपको बहुत लड़कियाँ भर भर के मिलेंगी, है ना. लेकिन आप कोशिश करो कि जो लड़कियाँ मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ना, कॉलेज स्कूल ट्यूशन जा रही हो, तब उनको मत छेड़ो, क्योंकि वैसे ही बहुत पढ़ाई का या टेंशन लोचा रहता है ना. तो उनको खामखा क्यों परेशान करना. तो आप कोशिश करो कि उन्हें तब पकड़ो जब वो ट्यूशन क्लासेस से या अपने स्कूल्स कॉलेज से वापस आ रही है, तो स्ट्रेस भी कम रहता है लाइफ में, है ना. ठीक है. अब तीसरे नंबर पे आती है मेरी फेवरेट जगह, जहाँ लेडीज़ मार्केट होगी, है ना. लेडीज़ मार्केट में जहाँ उनकी इमिटेशन ज्वेलरी मिलती है ना, सलवार सूट, साड़ी, चूड़ियाँ, ये सब शॉप्स होती है ना. मेहंदी वगैरह जहाँ लगाती हैं लड़कियाँ अपनी, तो वहाँ पर गोलगप्पे वगैरह, पानी पूरी की भी शॉप्स होती हैं. देन आपके वहाँ लॉन्जरी, लिंगरे जो भी बोलते हैं उसको ना, ब्रा एंड पेंटी की जो शॉप्स होती हैं, वहाँ भी आपको मिल सकती हैं लड़कियाँ. तो ऐसी सी जगह पे भी आप मार्केट में भी ट्राई कर सकते हो, है ना. तो ये बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स हो गए जहाँ आपको लड़कियाँ ज़रूर मिलेंगी, है ना. तो शुरू करते हैं ना. बात करते हैं भाई, टॉपिक पे आती है कि लड़कियों को कैसे अप्रोच किया जाए, है ना. तो उसमें आपके 3 वेपन्स होते हैं. एक आपके हो गया आई कांटेक्ट, एक होगी आपकी स्माइल, और आपकी होगी एक बॉडी लैंग्वेज. तो इन तीनों का इस्तेमाल करना है आपको. ये तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी. तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो. आप मिरर के सामने, है ना, प्रैक्टिस कर सकते हो
कि भाई आपके आई कांटेक्ट कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए आपकी स्माइल को, फ्लर्टिशियस स्माइल को, है ना। और आपकी आई कांटेक्ट और आपकी स्माइल कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज को, है ना। आप बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें एक होती है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। तो आपको हमेशा अपनी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखनी है। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज जो आपको नहीं करनी है उसमें आता है कि भाई अपना हैंड्स फोल्ड नहीं करने हैं ना, टांगे क्रॉस नहीं करनी है अपनी, है ना। और बहुत से लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, स्क्रिबल करते रहते हैं मोबाइल में, है ना। पता नहीं क्या देखते रहते हैं, मुझे नहीं मालूम। यूट्यूब देखते हैं शायद। तो हमेशा, और वो बहुत से लोग कान में हमेशा लगा के रखते हैं ना, ब्लूटूथ या हेडफोन वगैरह। तो वो सब चीज़ें नहीं करना है भाई, वो सब नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में आ गई। तो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज को अवॉइड करना है, क्योंकि उससे हमें ऐसा लगता है, सामने वाली लड़की को ये लगता है कि भाई ये बंदा अप्रोचेबल नहीं है, थोड़ा एरोगेंट टाइप का है ना। और ये भाई इसको अप्रोच करना, मतलब वो आपको पास क्यों आएगी, मतलब जब ऐसे नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हो भाई, बहुत एरोगेंट टाइप के हो आप, है ना। आपको अप्रोचेबल दिखाना है सामने वाली लड़की की नज़र में, आपको अपने आप को अप्रोचेबल दिखाना है ना। तो उसके लिए पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होगी, जैसे कि आप थोड़ा बहुत अपना ऐसे 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 इशारा कर सकते हो ना हाथ से। और देन आपका जो आपके, ऑब्वियसली बात है, जो आपका जूते होंगे ना, जूते टोज होंगे, वो हमेशा पॉइंट करनी चाहिए लड़की की आइज़ की तरफ या लड़की की तरफ जिस पे आप कोशिश कर रहे हो जिसको पटाने की, है ना। और थोड़ा थोड़ा स्माइल पास करनी है देख के उसको, है ना। अगर वो सामने वाली बंदी भी बराबर लाइन देती है आपको, वो भी मतलब क्या है, ऐसा तो है नहीं कि पूरा आपके पास आ जाएगी, लेकिन ये है कि वो भी हल्की सी स्माइल करेगी, आपने स्माइल करी, वो भी हल्की सी अगर स्माइल करती है ना, फिर शर्म की वजह से नीचे लड़कियां सिर झुका लेती हैं, इस टाइप का कोई आपको करती है लड़कियां, तो आप समझ जाओ 40% जीत होगी आपकी। तो आप उन लड़कियों को जाके अप्रोच कर सकते हो, है ना। उन लड़कियों को जाके आपने अगर अप्रोच कर लिया तो फिर आप उनसे ज़्यादा बात नहीं करनी है, 5 मिनट 10 मिनट जिससे ज़्यादा बात नहीं करनी है। हाय हेलो करना है ना, टच बैरियर तोड़ देना है, पहले तो कॉन्फिडेंटली हैंड शेक करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंटली आपने हैंड शेक करने के बाद आपको उससे ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी है, तारीफ कर दो थोड़ी बहुत, है ना, मुझे बड़ी खूबसूरत लगी ये वो, है ना। और मैं तो ऐसे ही आ गया रेंडमली। तो उसके बाद फिर आप कोशिश करो कि उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ना, नेक्स्ट टाइम भी तो मिलना है ना उससे, एक ही बार थोड़ा ना मिलना है। कोशिश करो उसका फ़ोन नंबर वगैरह या जानकारी जितनी हो सके मिल जाए, है ना। उसके बाद वहाँ से कट लो, है ना। अब देखो बात आती है, ये सब तो आपने कर लिया। बहुत सारे मेरे दोस्त बोले हैं कि भाई हमारे पास ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पसीने छूट जाते हैं लड़की से बात करने में, तो कोई ऐसी टिप बताओ। तो भाई इसको ओवरकम करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छी टिप है ना। आप देखो, महीने में होते हैं 30 दिन, ठीक है, साल में होते हैं 12 महीने। अगर आप डेली ये सब बना लो कि डेली भाई एक लड़की को अप्रोच करना है आपको, ठीक है, डेली, तो आप महीने में 30 लड़कियों को अप्रोच करोगे, है ना। और सोच लो फिर साल में कितनी लड़कियों को अप्रोच करोगे। पहले महीने की बात करते हैं। अगर महीने में 30 लड़कियों को अप्रोच करते हो, उन 30 में से मरी सी मरी हालत में मतलब 4 लड़कियों का ही आपको फ़ोन नंबर मिलता है ना, ये टेक्निक यूज़ करके, है ना। बाकी सब आपको रिजेक्ट कर देती है। तो आपको रिजेक्शन भी स्पोर्टिंगली लेना है ना। और वो उनको भूल जाओ, जो लड़कियों का फ़ोन नंबर मिला उन पर कॉन्सेंट्रेट करो, है ना। तो वो जो 4 लड़कियां हैं ना, तो 4 लड़कियां आपको महीने में मिली, तो साल में कितनी होगी, 12 महीने होते हैं ना, 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 48, अप्रोक्सीमेटली 50 लड़कियां आपको साल में जिनका फ़ोन नंबर मिल रहा है, जिनसे आप दोस्ती बढ़ा सकते हो। सपोज करो 50 में से 25 या 20 लड़कियां आपकी अच्छी दोस्त बन जाती है ना। और क्या उनमें से आप मतलब 4 या 5 लड़कियां गर्लफ्रेंड बना नहीं सकते, इजीली बना सकते हो, है ना। सोचने वाली बात है। तो हम लोग बोलते हैं भाई पसीने छूट गया, ऐसा कुछ नहीं है, कोशिश करना है आपको लगातार। और ये मैं ये भी नहीं बोल रहा आपको कि भाई दिन में आपको 4 4 5 5 लड़कियों को अप्रोच करना है ना। सिर्फ मैंने आपको बताया भाई दिन में एक लड़की से बात करो तमीज़ से, है ना, प्लानिंग के साथ, है ना, श्योर एंड शॉर्ट। तो सोच सकते हो, अगर आपको भाई एक लड़की से ही प्यार हो गया, सच्चा प्यार, तो फिर ज़रूरत भी नहीं है आपको इधर उधर मुंह मारने की, है ना। उस लड़की पे कॉन्सेंट्रेट करो, उसी से प्यार करो, शादी करो, है ना, कुछ भी करो। लेकिन आपको प्रोफेशनल फ्लर्टर बनना है तो फिर 3 4 5 लड़कियां भी रख सकते हो, है ना, घुमा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आजकल तो सब यही पॉपुलर चल रहा है ना दोस्तों। तो दोस्तों फिर अब यही मैं आपको वीडियो भी बताता हूँ इंग्लिश वर्जन में, है ना। अब हम इंग्लिश वर्जन में सीखते हैं इस वीडियो को। तो आप ध्यान से सुनना इंग्लिश वर्जन को हिंदी वर्जन के बाद, ताकि आपको फिर स्पोकन इंग्लिश में भी इजी हो सीखने में ना। टिप्स तो मिल ही रही है आपको फ्री में। So guys, what you have to do, to approach a woman, first of all, you need to find out and figure out actually where are the possible hotspot or spots where you can find, the desirable women of your choice. So the popular spots, in my opinion, are, number one would be say grocery stores. In grocery stores you can get many vegetables and stuffs like you need in a day-to-day life, and it's very obvious that you will get many girls over there, and which for from
and you have a golden opportunity to interact with them, and you have a purpose to interact with them, over, you can interact over, bargaining, or the quality of vegetables. So, or you will even, get girls who are quite frequent to that, grocery stores. That grocery stores could be in a supermarket, or or it could be an individual spot. Second in this list would be, which is actually my favorite destination to hunt girls, and it has to be the educational institutes. Educational institutes, including colleges, schools, and then you have tuition classes, coaching institutes, but one thing you have to keep in mind and be very careful while chasing girls at these hotspots is that, never approach a woman when or a girl, when they are going towards the educational institutes, and make sure that you only approach them when they are returning from their education institutes, maybe college, school, or whatever, tuition classes or coaching institutes. So why I'm telling you to, why you shouldn't, approach a girl when they are going to the education institutes, is because of the simple reason that there's a lot of stress on these girls, while they are going to colleges or educational institutes, because of the burden of so much of studies, and it is quite possible that they will not like your idea, of and they will be under stress, so it's better when they are always, always make it a point that always approach a cheerful girl. It is no point when a girl is, if she might have a quarrel at home, or she's unhappy, so chances are that she won't reply back. I'm telling you these sort of things so that the success rate of your approaching girls, and it counts actually, so like I said, and then you also have certain markets, ladies markets, where girls often visit those markets, like in markets which consist of imitation jewelries, and sarees, and salwar suit, and many garment shops there, even lingerie, lingere, whatever you call, brand panties shops, and often you will also get to see many Indian street foods like golgappe and pani puri sort of stuff, samosas and ice creams. So there you will get many girls, and it's a wonderful opportunity for you to grab one girl there. So these are possible spots, but now we come to the main point, how to approach a woman. For approaching a woman, you need to have some weapon. Three weapons you should have. First one is your eye contact, then your flirtatious smile, and body language. So in order to be a successful flirter, you need to, your eye contact should complement your smile, and your eye contact along with your flirtatious smile should complement your body language, and even body language, if you talk about your body language, should be, you never it should be, negative body language. Negative body language comprises of people, who are folding their hands or crossing their legs, and some guys will often, scribble their mobile phones, or they will, plug in those cheap Bluetooths or earphones inside their ear holes. So make sure you plug out those earphones on and that mobile, and keep that mobile aside or inside your pocket, so that you look more approachable. These sort of negative body language will in back of the girl you are chasing, back of her mind, she will feel like, yeah, this guy is very arrogant. Negative body language indicates arrogance, and even girls will think that you are unapproachable. So make sure you look approachable and confident enough to have a conversation with a girl. So I spoke about it, the body language. Now what you have to do is, you can practice all sort of these eye contact and smile. You can even practice it in front of a mirror before going as a pro in the streets. So after certain practice sessions, you can go for a kill and
impress any girl. So now comes the point, how should we interact with a girl? If what sort of girl we should approach? You shouldn't approach any random girl. What you can do is, when you smiles and the girl which you are chasing, she smiles back, or she feels very shy, she also gentle, she gave you a gentle smile, and then she was like a shy girl, she nod her head downwards, so that's a 40% chance that that girl is interested in you. So you can go and approach randomly to that girl, and have a confident handshake with her. So with a handshake you are even breaking that touch barrier, and then after breaking the touch barrier, you should interact with her, but make sure the interaction should be very brief one, not more than 5 minutes. You can even compliment her, her beauty. You can use many pros or even good adjectives to compliment her, but make sure that you take her contact information before you leave the spot. And or even if she doesn't give you her phone number directly, then you can take her email address, or even ask her next time where should we meet, because make sure that you are meeting that girl in future also. Okay, so because you have to meet that girl in future also, not only on that day, not that specific day. So that way you can go about a girl, but then there are some queries. My friends will tell that yeah, everything is fine bro, we will follow these tips, but the main problem lies when we are approaching a girl. We have lots of sweaty palms and we are not confident enough to approach girls. So how to overcome this situation, guys? Yeah, I have a wonderful tip for you guys, how to approach a girl without those sweaty palms and being a confident guy. In order to increase your confidence, what you can do is, there are like first of all, listen to me very carefully. There are like 30 days in a month, and 12 months in a year, single year. Okay, so if you make it a habit that you daily approach a single girl, so in a month you can approach 30 girls, and let's say out of those 30 girls your success ratio is very less, you only manage to get 4 girls phone numbers, and so if you calculate, you by using simple mathematics, you multiplied 4 by 12, 12 months, 4 girls multiplied by 12 months. So in a year you can easily get 48 girls, let's say 50 girls phone numbers you have with you in a year. So and you are regularly interacting with those girls over phone, and out of the 50 girls, 20 girls have become your good friends, and then tell me one thing, out of 20 you are not that by now, interacting with so many girls, by now you have grown in confidence. So I'm pretty sure that definitely you will have 4 or 5 or even more girlfriends, okay, in a year. So it's a very simple tip, you should utilize it, and then you should go about it like this, like a pro, and you should overcome your fears. So after overcoming your fears, and if you are very serious for a girl, and you may why there is a need to have 5 or 6 or 7 or even 10 girlfriends, it is for those professional flirters tips. But if you are in love with a single girl and you get the love of your life, then it's fine, you can stick to one girl only, and be happy, guys. Okay, so guys, comment me below how was my today's video. I spoke in Hindi, I spoke in English, and teaching you spoken English for free. I'm giving you wonderful tips and flirting tips and dating tips. So make sure you like my video and comment me below. And till then, take care, goodbye दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, है ना, अच्छे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ नेक्स्ट